Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Chapter 2 Atomic Structure. The topics are electronic configuration. The main topic is rules for distribution of electron in different orbitals. First of all, you should know the electronic configuration. The electronic configuration is the distribution of electron of an atom or molecules in atomic or molecular orbitals. For example, the electronic configuration for the atom neon will be 1s2, 2s2, 2p6, as we know that the atomic number of neon is 10. So the distribution of electron will be like this. The method which we apply to determine the electronic configuration is given. If we have the 2 electrons, the electronic configuration will be 1s2. If we have the 12 electron, electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. I am sure students you know very well how can we write the electronic configuration of any element if the atomic number is given. Okay, if we have the 20 electrons, we can write the electronic configuration in this method. Now come to the main topic of this lecture, that is the rules or principles. Students, there are few rules by which we can write the electronic configuration, or we can say that we should know that how electrons can be distributed in the different orbitals. There are few rules or principles. Which are they? First is the n plus l rule, second is the Pauli exclusion principle, third is the Aufbau principle, and last one is the Hund's rule. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये रूल्स और प्रिंसिपल्स किस लिए होते हैं? हमें ये पता चले कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है. ओके, first is the n plus l rule. We will study in detail one by one. First is the n plus l rule. This rule is given by a scientist. His name was the Wissweiser. Statement was electron will enter first in the level having the low value of n plus l. Now I am sure you know very well about n. N is actually representing the principal quantum number and L is representing the azimuthal quantum number. So according to the scientist, the electron will enter in that orbital which having the lower value of n plus l value, and if two orbitals have the same n plus l value, then electron will enter the level of the lower value of n. Okay, now example, pick the orbital with the lower energy. For example, first one we have the 3d and 4s. First of all, let's determine the n plus l for the first one. Come on, determine the n plus l for the first one, 3d. If we talk about the 3d, the n or you can say principal quantum number for this orbital will be n is equal to 3, and if we talk about the l value, as we know very well that there are 4 subshell S, P, D, F, and if we know the number of these subshells, then for S there is 0, for P the number is 1, for D the number is 2, and for F the number is 3. So here we have the 3D. 3D का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ D की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2. तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज़ 2. सो इफ़ वी सम द n प्लस l, तो अगर हम n और l को प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज़ 5. ओके, सेम फॉर द 4s. अब इस 4s में हमारे पास n की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू हमें पता है, s की वैल्यू क्या होती है, 0. सो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. अब n प्लस l में 4 प्लस 0 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 4. दैट इज़ द 4. सो अकॉर्डिंग टू द scientist, the electron will enter first in the level having the lower value of n plus l. So in this example, the lower value is of the 4s. So the 4s orbital will be filled first because it has the lower energy than that of the 3d. You got it, student? Now come to the second one, that is the 2p and 3s. Now let's determine the n plus l for the 2p. Here n is equal to 2, the value of p is 1. By calculating the n plus l, we obtain the number 3. ओके, सेम फॉर द 3s. तो अगर हम 3s से कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 3 है,
L की वैल्यू हमारे पास 0 है तो n प्लस L की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी. नाउ हेयर वी विल अप्लाई द सेकंड रूल ऑफ द n plus L, that as the value of n plus is equal in both cases, therefore 2p will be filled first. Why? Because if the both n plus L values are same according to the scientist, if two orbitals having the same n plus value, then electron will enter the level of the lower value of n. इसलिए हमारे पास यहाँ पे लोअर वैल्यू n किसकी है? दिस वन. ओके, हमारे पास दिस वन कंटेनिंग द लोअर वैल्यू ऑफ n. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पहले इंटर होगा वो 2p में होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट principle, that is the Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle, it was proposed by a scientist, Wolfgang Pauli, in 1925. According to him, it is not possible for the two electrons in the same orbital to have all the four quantum numbers identical. Let's see how. As each orbital can accommodate up to 2 electrons, we know very well about it. At least 3 quantum numbers of 2 electrons of the same orbital could be same, but the fourth one, that is the spin quantum number, will be different. Obviously, if 2 electrons in the same orbit, we know very well one will be moved to the clockwise and the second will be anti-clockwise. So it is not possible that both electrons will spin in the same direction. Example, in case of helium, we know very well there are only 2 electrons in the helium molecule. So the quantum number of the first electron and the quantum number of second electron. If we talk about the n for the both electron will be 1. Okay, let me write the electronic configuration of helium, that is 1s2. So the n value will be for both will be 1. And if we talk about the L value, तो हमें पता है कि S की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 0. तो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी 0. ठीक है, 0 याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ 0 का मतलब मैथ्स वाला 0 नहीं है. ये हमारे पास S ऑर्बिटल जो S सबशेल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 0. ओके, ये इसका डिजिग्नेटेड साइन है, सिंबल है. सेकेंड, हमारे पास m की वैल्यू वो भी हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारे पास जो आपको याद होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको बताया गया था कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं +1 और -1 से. या अगर हमारे पास 2 होता है तो +-2 से, अगर 3 की वैल्यू होती है तो +-3 से. लेकिन अगर हमारे पास 0 होता है तो वो सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है. ठीक है, एक ही होती है, दैट इज़ 0. एंड द लास्ट वन, if there are 2 electrons in the same orbital, then one will be spin positive clockwise and the second will be anti-clockwise. तो हम कह सकते हैं that these three are the same, but the fourth one, that is the spin quantum number, obviously are different. So according to the scientists, it is not possible for 2 electrons in the same orbital to have all the 4 quantum numbers identical, which is proved by this example. Now come to the next principle, that is the Aufbau. Aufbau is a German word which means build up. Statement: the orbitals are filled up with electrons in the increasing order of their energy. The orbitals of minimum energy are filled up first with the electrons and then the high energy orbitals are filled. Obviously we know very well कि हमारे पास न्यूक्लियस के साथ वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पर फिल होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं. जितना जितना ऑर्बिटल हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी हाई होती जाएगी. सो द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इज़, सबसे लोअर एनर्जी हमारे पास 1s की है, थोड़ी सी ज़्यादा 2s है, फिर इस तरह से हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है. नाउ कम टू द लास्ट रूल, दैट इज़ द Hund's rule. Hund's statement: each orbital in the subshell is occupied by a single electron before any orbital is doubly occupied. Each orbital in the subshell is occupied by a single electron before any orbital is doubly occupied. Explanation: according to the rule, electron will fill first singly in the available orbital with the same spin rather than to live in the same orbital with the opposite spin. For example, how? For example, in carbon we have the 6 electrons. Electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p2.
वी नो दैट द 2p2। अब ये 2p2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा px ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा py में। ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो बजाय से कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से यू कैन से कि कोशिश करते हैं कि सेम स्पिन के बजाय रहने के बजाय, ऑपोजिट स्पिन रहने के बजाय सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर वो रिजाइड करते हैं। सेम फॉर द यू कैन सी फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p3। अब 2p3 जो हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास p में होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास y में और एक हमारे पास pz में होता है। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में रहने के बजाय सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहते हैं। ठीक है, अगर अवेलेबल हो देन सेम फॉर इफ़ द नेक्स्ट वन दैट इज़ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्योंकि हमारे पास मज़ीद यहाँ ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अब पेयर बनाना शुरू कर दिया और यू कैन से विद द ऑपोजिट स्पिन इन्होंने एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ईच ऑर्बिटल इन द सबशेल ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में हमारे पास यहाँ तमाम इलेक्ट्रॉन सिंगल थे, लेकिन जब हमारे पास मज़ीद वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं थे फिर इलेक्ट्रॉन डबली ऑक्यूपाई होना शुरू हो गया। एंड सेम डेफिनेटली आप गेस कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, तो फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयर फॉर्म में होगा। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे रिपेल वन अनदर एंड दे विल अपार्ट as far as possible if they have choice to do so. Magnetic properties, paramagnetic substance, there are two types of magnetic you can say compounds or substances. First is the paramagnetic substances. Those substances which are attracted by the magnetic field are called the paramagnetic substances. Such substances contain the unpaired electron. Let me tell you students, the unpaired electron work like a small magnet. तो हमारे पास अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया लास्ट एग्जांपल के अंदर, कार्बन में हमारे पास था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे वर्क लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। तो अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। सो सच कंपाउंड्स विच कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे वर्क लाइक अ स्मॉल मैग्नेट and those substances are known as the paramagnetic substances. Second is the diamagnetic substances. Those substances which are not attracted by the magnetic field. Obviously अगर attract नहीं हो रहे हैं आप समझ जाएं कि इसके अंदर हमारे पास unpaired electrons नहीं होंगे, जितने भी electrons होंगे all will be in the paired form. तो जब paired form electrons होते हैं उनको अगर magnetic field में लेके जाएं तो वहाँ पर वो किसी किस्म की attraction show नहीं करते हैं. So such substances which contain the paired electrons are known as the diamagnetic. Example you may see here in helium there are the paired electrons, so they are called the diamagnetic. In lithium we have a one unpaired electron which work like a small magnet, so they are known as the paramagnetic. Home assignment, example of the chapter and exercise of the chapter. Students, here our chapter is completed and I'm sure आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से chapter समझ आ गया होगा. Now start practice the exercise और हमारी book में जितने भी examples हैं start working on it. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उस जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है और जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. But first you try it by your own. Thank you so much. Wish you all the best. Allah Hafiz.